तिब्ब यूनानी एक कदीम तरीक़े इलाज है, हिंदुस्तानी तिब्बी निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। इस तरीक़े इलाज में मज़ीद रिसर्च, मज़ीद तहकीक होनी चाहिए ताकि मौजूदा दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिब्ब यूनानी से फ़ायदा उठा सकें। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी कॉन्फरंस में इन ख़यालात का इजहार किया गया। मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत आयुष के तहत 20 और 21 सितंबर 2023 यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई है, जिसका उन्वान है साइंटिफिक राइटिंग फॉर यूनानी टीचर्स। इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत कर्नाटक महकमे आयुष की कमिश्नर लीलावती ने यूनानी मेडिसिन की तारीख पर रोशनी डाली। IAS ऑफिसर लीलावती ने कहा कि अरब ममालिक में मकबूलियत हासिल करने के बाद यूनानी तरीक़े इलाज एशियाई ममालिक में दाखिल हुआ। हिंदुस्तान और चीन के कदीम तरीक़े इलाजों के साथ तिब्ब यूनानी भी बर्रे सगीर में फ़रोग पाने लगा। लीलावती ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदीम इलाज में मज़ीद तहकीक का काम अंजाम देने की ज़रूरत है। यूनानी में रिसर्च के लिए हिंदुस्तान भर में मरकज़ी हुकूमत ने 22 मराकज़ कायम किए हैं। दीगर रिवायती और कदीम इलाजों के साथ तिब्ब यूनानी को भी फ़रोग देने की कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर TIGS के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ यूनानी जैसे ट्रेडिशनल तरीके भी बराबर की अहमियत रखते हैं। यूनानी, आयुर्वेदा और दीगर कदीम इलाजों की खुसूसियत यह है कि इन तमाम की अद्वियात ग़िज़ाई उन्सर पर मबनी होती हैं और ज़माने कदीम से लोग इन्हें इख्तियार करते हुए आ रहे हैं। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर असीमा बानो ने कहा कि रिसर्च पेपर, तहकीकी मकाले सिर्फ प्रमोशन हासिल करने या ज़ाती फ़ायदे के लिए लिखे न जाएं, बल्कि इनका मकसद अवाम की, मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद व रहनुमाई होना चाहिए। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल वदूद, कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर अब्दुल हसीब अंसारी ने इफ्तिताई जलसे से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक इतरत ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। Lot of knowledge. Any traditional discipline usually will be an accumulation of knowledge from so many years. That doesn't mean that we should not do research, because any discipline or any knowledge, if it has to develop and progress, then continuously some scientific research work has to take place. Once when the knowledge stops doing that, then the knowledge fades. So the same thing with Unani medicine also. It's a very traditional medicine, and you know that in India, this Unani medicine has become a part of Indian indigenous medical system like Ayurveda, Siddha. It has entered into India way back 2500 years back when Greeks invaded India. So Unani means Greek. So during the 7th century, when Caliphate Empire was established in that particular region, they translated all the knowledge or disciplines into Arabic language, and that's how this medicine knowledge also was translated, and it was called as Perso-Arabic medicinal system. And it became popular in the Arabic countries and Middle East countries, and later on it moved to Asia. Central Asia and South Asia, it is quite popular. And as I said that this particular knowledge, it came way back 2500 years back to India. Now it has few elements of Indian and Chinese medicine system also. So naturally, when any discipline passes from one region to the other region, the region where it starts flourishing or developing, there they will include that particular land's elements also. That's how Unani system also has grown. And this system developed a lot in India, and it became quite popular and developed and progressed during Sultanate period, then Khilji's period and Mughal period. And even today, it is one of the popular
medical system in India. 1972-71, Ayush department in the center was established, and they established many research centers for the development of Unani medical system. Nearly 22 research centers have been established all over India for the development of this particular medicinal system. And as far as the knowledge of the Unani medicine is concerned, for that many colleges have been established, and nearly we have very well established 56 colleges all over India and 45 hospitals, well established Unani hospitals in India. And in Karnataka we have 5. One among them is the Karnataka Government Unani Medical College, which is established in Bangalore. And so, with the help of all these things, we have to develop this particular system, the knowledge of this particular system, and we should see that it progresses. And we have also established a digital library which consists of more than 98 formulations. And this particular medicine has more than 2,000 medicines which have been extracted from herbs, minerals, and animal sources. And usually we usually use these traditional medicines. And when I say traditional medicines, indigenous medicines, they have got their own specialities. See, almost all the indigenous medicines, Unani, Siddha, Ayurveda, they are not like any other developed medicines where they identify that there is one particular disease and there is a medicine for it. It is not like that. Usually, they teach a well-being life to the individuals. That is healthy living style. But nowadays, even modern medicine people also are talking about this. That is, they usually say that according to the seasons, what has to be taken and what not has to be taken, how a person should live the life regarding the sleep, regarding the working patterns, stress management, everything is included in the indigenous or traditional medicine system. The same is with the Unani. So, and they will not have any side effects because they use all the natural things which are part and parcel of our food. So you will not be scared taking any medicine of this indigenous system. So, and these indigenous systems also are helping a lot of middle and low class people to get medicinal facilities very easily. So now you might have understood that how important is this medicine and why the research works has to take place. The more the research works takes place in this particular field, you will update the medicinal field, and that's how you will help this particular Indian society to have a very healthy citizens, and that's how the society will develop. With these few words, I like to end my speech. Thank you. So nowadays people are doing publications only for that promotion, which is absolutely wrong. Why should you actually have publications? Whatever research you are doing, whatever knowledge you are gaining through your activities or your work, that has to be disseminated. That has to be passed on to generations. If somebody who has to take up a new work, a postgraduate or an undergraduate on any research, if he goes and does a literature search, it's much easier for them if they have some data available. I think dissemination of knowledge has to be the first motivation for any publication rather than a paper for a promotion. Having said that, writing paper is, as Sir said, he said science and art. I would say science, art, and lot of communication. Lot of communication skills come into what you write. And what you write has to be scientific. When I started writing my first paper, I had no help, absolutely. I wish I had such a conference. You'd call it a conference. I would want to be it like a workshop where you will have a discussion. So it's better all if you make it into a workshop so that you participate, interact, and then learn. Now, when I started working on my paper, I had absolutely no clue where to start and where to end. And that time, it was not connected to my promotion. I was still a postgraduate when I started writing my paper.
So I had to go and do a lot of research, and I could not get much content related to what I wanted to write. And that brought me into the idea that you have to have such workshops, and I congratulate the organizers for having organized such a workshop, and they deserve a big round of applause. And we should have many more workshops like this so that the younger generation realize the importance of writing. 6 years back, to use high-end science to solve societal problems. And that's where you will see that we have linked with what you are doing in your organization. So we address problems of infectious disease, rare genetic disorders, and crop improvement. These are big problems of society and requires multidisciplinary approaches and uh, not only high-end science but also the traditional knowledge and ancient wisdom. They are equally important for us. So, for instance, we have established state-of-the-art, world-class facilities to study infectious diseases, to vector biology, including mosquitoes, and how to control mosquitoes. So one way is to go and fog everything, blast everything, and we have been doing it for decades or centuries, but mosquitoes only increasing. You cannot go and destroy natural things, you cannot attack the biodiversity, that will be suicidal in fact. So we are taking an approach to look back how humanity has survived for thousands and thousands of years. The traditional knowledge which is there is really the wealth of our civilizations that we are all aware to here. So we extract appropriate knowledge from there and then try to use it for your purpose, not for changing the environment. So we have established a state-of-the-art facility where you can ask if a compound or a plant product or extract is repellent or attractant for mosquitoes. And I'm very happy to tell you that we are already having a collaboration with this institute and TIPS, where some of the compounds are being tested. And so this way we look for using the modern methods of science, test the traditional knowledge. If you have ideas, this is one of the examples. So you can actually do a designing of this room. You can put attractant somewhere and repellent somewhere, and the mosquitoes will be trapped, and this hall will be mosquito free. So that is the way to approach. We look for eco-friendly, sustainable, and acceptable methods of food security using natural varieties, measuring the nutrients in them, and then proposing them for the nutritional need, and not necessarily using more and more chemical or synthetic kind of food, which we are trending towards. Is not good for our health, and you are all more qualified in that than me to tell that. And lastly, we are also, I mentioned, we work on rare genetic disorders where, because of our social practices in many parts of the country, particularly in south in certain parts, lots of rare genetic disorders are not rare anymore. In fact, they occur in India today has 90 million people suffering from such disorders, for which, for many of them, there is not even a name for it to have any diagnostics or any treatment. So we are designing cheap and accessible methods of detection so that we can screen the population, give counseling to the potential parents, what care they have to take, do prenatal diagnosis or whatever, and reduce the disease burden. And at the same time, we are setting disease under this model where we can now use traditional knowledge, traditional medicine, whatever is written somewhere, and test it in the lab and show whether it's working or not. And if it works, then go ahead and use it. One good thing about traditional medicine is that it doesn't require lots of testing and trials because it's actually natural food most of the time, not synthetic oftentimes. So it's far more advantageous to use it at very little side effect or no side effect. So, and the idea, what I want to convey in and goes with that is that the modern science does not mean opposing to traditional knowledge. That was wrong concept. Maybe at some time when we were not a free country and there were other forces who were trying to downgrade something and sell something else.
but now it is very obvious that so many gems are coming out of our ancient knowledge, understanding of old literature, of medicine and science. I mean, you can also see that our knowledge of astrology is based on observations for thousands of years. Idea of evolution is just based on observation. Nobody has done the experiments. So traditional knowledge is nothing but thousands of years of experience and observation and putting them in place, which can be used for current and future generations. And that is in the context I want to really encourage you all to make best use of this workshop or conference. And in 10 postgraduate departments in 10 disciplines of Unani medicine and PhD in 2 departments, that is pharmacology and medicine. Since its inception, the institute is about to achieve the goals set for it. In the recent years, the institute has set up many milestones. This institute is now Intermediary Pharmacovigilance Center for Unani drugs. The institute hospital is India's first NABH accredited Unani hospital. The clinical laboratories of our hospital are NABL accredited of the Unani hospital laboratories, that is also the first in India. The faculty members and PG scholars of this department have published at least 1,000 research papers, and more than 300 of them are published in Index Journal and Journal of Impact Factors. The faculty members of this institute have published around 50 books, which are now good books of students, in good books of students and teachers of other Unani colleges, and many more credentials are in pipeline for the development of this institute. Scientific writing is an art, and many of us do not know this art, because without publication, a work is not work, it is nothing but wasting one's sweetness in desert air. And unless we know the art of scientific writing, we cannot publish our scientific works. Many of good works are being rejected by good journals only because of bad writing and bad language. This epic seminar or conference of 2 days will focus mainly on this scientific writing. I hope this seminar will pave the way for development of Unani medicine and will brush up and upskill the knowledge of Unani teachers. I hope the assemblage of galaxy of this learned speakers will benefit not only our teachers but our students also. With this, once again, I welcome all esteemed guests. Thank you. From across the country, guests, my faculty members, my students. महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, जब तक न आप आए उजाला न हो सका, जब तक न आप आए उजाला न हो सका. Dignitaries and vice, ladies and gentlemen, my colleagues, dear students, I heartily welcome you to 2 days National Conference on Scientific Writing. It is truly an honor to stand
before you as the organizing secretary of this conference. The conference is centered around the fusion of science and art of scientific writing. Our primary aim in hosting this conference is to impart two key messages. Firstly, we want to emphasize that scientific writing is not solely for the sake of academic advancement, but rather serve as a vital instrument for sharing knowledge and facilitating communication among researchers. In essence, we contend that publication is a duty that every researcher, academician, and practitioner who claims to have generated new knowledge must fulfill. It is essential to make this knowledge publicly available and subject to peer assessment. Secondly, we seek to convey that scientific writing is not a mere assemblage of eloquent words. Instead, it is defined by two essential qualities, that is, accuracy and clarity. Our focus should not be on impressing others, but on effectively expressing our ideas. The precision and clarity with which we can convey our discoveries can mean the difference between comprehending and applying knowledge or becoming lost in a vast sea of information. In the field of medical science, where each discovery or invention holds the potential to enhance lives, the significance of clear and efficient communication cannot be overstated. It is not merely about articulating intricate concepts, it is about doing so in a manner that makes the significance of your work accessible to anyone regardless of their background. This encapsulates the essence of scientific writing, and our intention is to explore deeply into this topic over the next 2 days, inshallah. Assalamu alaikum. Good morning. Very good morning to all of you. I feel honored and privileged that I stand before you today to propose a vote of thanks. I, on behalf of the organizing committee, convey my sincere thanks to the NIUM Commissioner Madam, who is presiding over this event. Madam, we are truly honored for your gracious presence. I convey my sincere thanks to the chief guest of this event, Dr. Rakesh Mishra sir. Sir, your presence has added great prestige to this conference. My sincere thanks to our guest of eminence, Dr. Unani madam. Despite our demanding schedule, she accepted our invitation. Madam, your work during the COVID-19 will be remembered for centuries, and we have the privilege to have you with us. Thank you, madam. And my sincere thanks to the Deputy Director Unani for her invaluable support in organizing this event. My sincere thanks also to the Director NIUM, sir, whose invaluable support and cooperation has made this event possible. My acknowledgement is also to all the guests who are of the dais, who are honored with their presence today. My sincere thanks to all my eminent speakers, Dr. Rizwan and Professor Denny Johnson. What should I say about you? One metric I will tell them that Dr. Rizwan sir has 68,000 citations in his name, and Professor Denny Johnson has 28,000 citations in his name, and they are the top 2% cited researchers in the field of public health. So we are truly honored by your students. My sincere thanks to all the HODs, faculty members. इसके जरिए क्या पैगाम दिया गया है? मैं प्रोफेसर गुलामुद्दीन सूफी, HOD इल्मुल अदविया, यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। और आज यहाँ पर जो इवेंट हुआ, ये इनॉग्रेशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन
साइंटिफिक राइटिंग। इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और ख़ासकर इसके जो मेहमान खुसूसी थे IAS कमिश्नर आयुष और दीगर मेहमान, उन्होंने इसकी ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान दिया कि साइंटिफिक राइटिंग यूनानी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और यूनानी को जो इसमें बहुत ज़्यादा ख़जाना अद्विया का रखा है और दवाओं का रखा है और इलाज के लिए बहुत मौसर तिब है, इसको साइंटिफिक बनाने के लिए हमें एविडेंस की ज़रूरत है और इस एविडेंस को सामने लाने के लिए साइंटिफिक राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को अच्छा खासा हाईलाइट किया गया और 2 दिन के लिए ये प्रोग्राम होगा और इन 2 दिनों में इसी पर गुफ्तगू होगी कि हम किस तरह से बेहतरीन पेपर लिख सकते हैं, बेहतरीन रिसर्च लोगों के सामने ला सकते हैं। यूनानी मेडिसिन बहुत ही पुरानी तिब है और इसमें जो है इलाज जो नेचुरल सोर्सेज से होता है, और ये तिब इंडिया में 2000 साल से है और बहुत ही मौसर इलाज है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त ज़रूरत ये है कि इसमें रिसर्च हो और रिसर्च के लिए हमें पेपर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। सर, आप कहाँ से ताल्लुक आपका है? कश्मीर में कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। जी, बड़ी खुशी का मौका है आज कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये 2 दिन का एक प्रोग्राम किया जा रहा है साइंटिफिक राइटिंग के ऊपर। इसमें मुल्क के बहुत सारे हिस्सों से, कोने कोने से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर 2 दिन क़याम करेंगे, और इसमें जो हमारे स्पीकर्स हैं बहुत एमिनेंट स्पीकर हैं, अक्रॉस इंडिया आए हुए हैं। बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं, एक हमारे नए जो पहले स्पीकर है रिजवान साहब, उनके 68,000 साइटेशंस हैं। वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिसर्चर्स में से आते हैं। वो हमें आज ये बता देंगे कि हमें साइंटिफिक पेपर लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी नॉलेज को डिसेमिनेट करना चाहिए पब्लिक में, और किस तरह से पब्लिक को फ़ायदा होगा। जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिसर्च को हम सिर्फ किताबों में रख के, अपने थेसिस में रख के नहीं रख सकते जब तक कि ये पब्लिक डोमेन में ना आए। पब्लिक डोमेन में आएगी तो लोगों तक पहुंच जाएगी हमने क्या किया है, और इसका फ़ायदा रफ़ाए आम को होगा, लोगों को होगा। आपका नाम? और मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर है, मैं मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कश्मीर से बेसिकली हूँ। मैं यहाँ 2012 से हूँ। दरअसल आज का जो ज़माना है वो साइंस का ज़माना है, और कोई भी पैथी हो या कोई भी सिस्टम हो, वो जो भी काम कर रहा है उसको उस वक्त तक जो है एक तरीके से अप्रूवल नहीं मिलता जब तक कि उसका कहीं पे पब्लिकेशन और उस अच्छे जर्नल्स में, जो इंडेक्स जर्नल हैं, बड़े जर्नल हैं, साइंटिफिक जर्नल हैं, उनमें जब तक उसकी पब्लिकेशन ना हो तब तक उन्हें जो है पूरा अप्रूवल नहीं मिलता। तो यूनानी सिस्टम जैसा कि एक बहुत ही कदीम और पुराना सिस्टम है, तो वक्त वक्त पे ज़रूरत रहती है इस बात की कि हम इसके ज़रिए से कुछ ऐसे प्रोग्राम कराएं जिससे हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें पेपर लिखने के लिए जो है कुछ थोड़ी सी हेल्प मिलती रहे, मदद मिलती रहे, ताकि हमारे यहाँ जो एक ख़जाना छुपा हुआ है यूनानी सिस्टम में, उसको जो है पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया जा सके। अच्छे जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, वैसे भी अभी भी हमारे सिर्फ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के तकरीबन 1500 पेपर्स जो है वो पब्लिश्ड हैं नेशनल इंटरनेशनल पेपर जर्नल्स में, और बहुत सारी बुक्स भी हम लोग जो है मॉडर्न जो उसलूब है, जो ज़माना है आज का साइंस का, उसके लिहाज से लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक नॉलेज को अपने जो है अपडेट करने के लिए ज़रूरत रहती है, और उसी ज़रूरत के लिहाज से ये जो एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है साइंटिफिक राइटिंग पे ये कराई गई है। इसमें हिंदुस्तान के जाने माने जो एक्सपर्ट हैं रिसर्च के, साइंटिफिक राइटिंग के, पब्लिक हेल्थ के, यूनानी मेडिसिन के, उन सबको जो है वो बुलाया गया है, और उनके जो है वो यहाँ आकर के अपने एक्सपीरियंसेस और अपने वो सारे हिडन तरीके और जो एक आसान रास्ते हो सकते हैं पब्लिकेशन के लिए, वो यहाँ शेयर करेंगे हम लोगों के साथ, और इंशाल्लाह इसमें जो है अच्छी हम लोगों को मदद रहेगी इन 2 दिन के नाम। और मेरा नाम तारिक नदीम खान है। मैं यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में जो शोबे कुल्लियात है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, उसमें HOD भी हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर भी। आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के एक बहुत कदीम ज़िले बदायूं से है। मैं डॉक्टर अब्दुल हसीब अंसारी, प्रोफेसर तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब डिपार्टमेंट, अंग्रेज़ी में इसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते हैं। ये असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 दिन का ये हमें
कॉन्फ्रेंस जो है प्रोवाइड किया गया था कि आपको ऑर्गेनाइज करना है, और उसमें तकरीबन 30 डेलीगेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम TA DA एकोमोडेशन सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और ये साइंटिफिक राइटिंग जो आज का बहुत ही अहम और चैलेंजिंग मौजू है, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी आप काम करते हैं हॉस्पिटल में, जो कुछ भी आप करते हैं उसको अगर राइटिंग में नहीं लाएंगे और वो भी प्रॉपर राइटिंग में नहीं लाएंगे तो वो आपका काम की कोई वक़्त नहीं होगी। जब वो प्रॉपर राइटिंग में आ जाता है और वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचता है, प्रिंट मीडिया तक पहुंचता है, तो फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ताल्लुक से ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहमियत के हामिल है। इसमें ख़ास तौर से हमारे 4 मेहमान जो हैं, बल्कि 5 मेहमान हैं जो गेस्ट स्पीकर की हैसियत से इसमें शामिल होंगे, जिसमें डॉक्टर रिजवान साहब हैं, जिनके अभी आपको बताया गया कि 65,000 से ज़्यादा साइटेशन है। साइटेशन मीन्स इनकी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है, जो पेपर्स हैं, उसको कितने लोगों ने अपनी जर्नल में या अपनी जो है पेपर्स में उसको जगह दी, तो उसको हम एक तरीके से साइटेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर डैनी जॉन है, इसके अलावा डॉक्टर शुभदा नागरकर हैं जो UGC केयर यूनिट की और केयर की कोऑर्डिनेटर भी हैं, और वो भी आएंगी कल। और उसके अलावा हमारे डायरेक्टर साहब का भी एक लेक्चर होगा। इसके अलावा 2 ऑनलाइन लेक्चर भी हमने करा रखे हैं इसमें, जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। एक पादी साहब हैं जिनका साइंटिफिक राइटिंग में बहुत बड़ा नाम है, और वो ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में अपना लेक्चर देंगे, और वो हमें क्या कहते हैं पंजाब या उधर से जो ज्वाइन करेंगे। और दूसरी एक मैडम है तनिका, उनका भी बहुत बड़ा नाम है इसमें साइंटिफिक राइटिंग के ताल्लुक से, वो भी हमें ऑनलाइन जो है ज्वाइन करेंगी। और ये 2 दिन का हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, और इसमें हमारे तकरीबन 30 जो है डेलीगेट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया, फ्राम कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब तमाम जो है डेलीगेट्स आए हुए हैं, और वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और उनके फिर पेपर लिखने वगैरह में काफ़ी मदद मिलेगी। और तिब्बी यूनानी को ख़ास तौर से इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि तिब्बी यूनानी में बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे मुशाहिदात हैं, बहुत सारे क्लिनिकल जो ऑब्जर्वेशन है जो पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कैसे पब्लिश किया जाए, क्या उन पब्लिकेशन किस तरह से किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद रिव्यू लिटरेचर होता है, और उसके बाद मेथोडोलॉजी उसकी क्या होती है, फिर रिजल्ट निकाल जाता है, कंक्लूजन, वो पूरा एक स्टेप्स है। उस स्टेप के लिहाज से ये हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो डेलीगेट जो लेक्चर देंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से ये किया जाएगा। और मैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस को जो है करवा रहा हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हूँ, शोबे तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब में, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मैं इसको इंशाअल्लाह पूरा करूँगा।